Hi everyone. So as you might be familiar, मेरी जो videos होती हैं YouTube पे, they are very raw. I don't even edit them, and these are literally just my thoughts, unfiltered, unedited, raw, true, honest. So anyway, long story short, अभी मतलब अ टिपिकल डे जो मैंने कल के अपने व्लॉग में कहा था ना कि नेगेटिविटी का जो भंडोरा हम लोग एज पाकिस्तानी ने देखना शुरू कर लिया है एंड देन हाउ कैन वन गो अबाउट देयर डे एंड be normal when they get to see such elements of grotesqueness that it's just insane. It's fucking ridiculous. If you've not already heard or seen, let me show you what's trending on Twitter. तो ये हैं आपके ट्रेंड्स फॉर यू में all of this, but the one that is particularly catching my attention is this called Justice for Fatima. अब इसके अंदर जो है जाहिर सी बात है, this is a little child who has become a subject of abuse. Another daughter of Hawa put to death. 10-year-old Fatima was tragically subjected to abuse and cruelty. It's causing immense sorrow and shame for humanity. This distressing CCTV footage of her demise is too difficult to watch. ओके अब सीन ये है कि एक तो ये मनहूस म्यूज़िक जो है ना, ये हर वीडियो में एक तो ये डाल देते हैं, बी इट मगिंग, बी इट रेप, असॉल्ट, वट एवर, दे जस्ट पुट दिस फकिंग एडिटेड म्यूजिक. अगेन दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. पॉइंट इज कि इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं जा रहा. आई एम गोना जस्ट कट द क्रैप एंड बी लाइक, व्हेन डिड दैट गर्ल ज़ैनब, व्हेन वाज शी रेप्ड एंड किल्ड? दैट वाज quite a while back, right? Several years ago. But nothing has fucking changed. Nothing. Because कानून तो चलो आप बिल भी ले आते हैं. They made something called Zainab Alert Bill. But as long as the law is not enforced, what is stopping all these pedophilic motherfuckers from doing all these heinous acts? Like क्या रोक रहा है? And ये तो चलो मंजर आम पे आ गया बिकॉज दिस पुअर गर्ल डाइड. हाउ मेनी ऑफ these cases go unreported? And there's absolutely no fear of anything. ना इनको मजहब से डर लगता है इन criminals को. I can't abuse because I don't want to get this video, deleted or something. But point is कि किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का खौफ नहीं है, किसी बात की शर्म नहीं है. Because and then they call themselves Muslims, and then they have the right to categorize other people as non-Muslims, which again is boiling my blood because again there were some blasphemy charges on some Christian communities and उनके घर जला दिए because बहुत सवाब समझ के जलाए. So मुझे नहीं समझ आता कि ये पागलपन जो है ये कब तक कंटिन्यू करेगा. And children are getting raped left, right and center. There's no justice whatsoever, and there's no fear. There's no deterrent either. मतलब अगर कोई पकड़ा जाए भी क्या होगा? केस होगा, लंबी चलेगी बात, लोग थकेंगे, भूल जाएंगे eventually, and then you just wait for another calamity to hit, and then you realize कि अच्छा भाई, shit is really hitting the fan. तो point is कि हल क्या है? हल क्या है? Like, I'm so unfazed by this because as a Pakistani, I think we're all very prone to disappointment and to hearing about such negative news कि दिल नहीं टूटता. Like, obviously, the marginal disutility you get from hearing drastic news. हाँ, अगर ये खबर कहीं कनाडा वैनाडा में होती तो वहाँ का तो लोगों का खून खौल जाता. हमारी तो कौम ही ढीठ है, सोई पड़ी है. Nobody gives a shit basically, and they're gonna put all these emo sad music.
they're going to write blogs about it, they're going to rant about it, मजम्मत होगी, condemnation होगी, लेकिन होगा क्या? It'll just fizzle out like any other bloody case. Yes, okay, they might make an example of this particular guy, this particular bastard, because केस जो है अभी ट्विटर पे ट्रेंडिंग है, like that makes a hell of a difference. But point is कि down the line, why isn't there anyone who's enforcing justice to the extent कि you make sure that it deters any future son of a bitch from doing such a similar thing? Because अगर like to make laws you need to get into the mind of the criminal. आप जब तक अपने आप को समझ नहीं जाएं कि अच्छा एज अ क्रिमिनल मैं क्या क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, यू नीड टू सी कि भाई the reason why a criminal does what he does is because he knows he can get away with it. He knows that the penalty is not so grave. Why is it कि सऊदी अरेबिया में लोग चोरी का सोचते भी नहीं है? बिकॉज उनको पता है पेनल्टी में मारे जाएंगे, हाथ कट लाइक एम्प्यूटेट होगा, लाइक दैट इज क्वाइट अ ग्रेव पेनल्टी. और मजाल है कि मतलब पीपल लिटरली लीव देयर गोल्ड शॉप्स अनअटेंडेड बिकॉज दे नो दैट द पर्सन हु विल बी कॉट विल बी अ गॉनर, मतलब उसके चीथड़े उड़ जाएंगे. तो नो बडी वॉन्ट्स टू मेस विद द लॉ. यहाँ पे तो आपके माशाल्लाह सिग्नल तोड़ने वाले जो हैं वो इतने नाज से सिग्नल तोड़ते हैं. सिग्नल्स तो मुझे लगता है मोटरसाइकिल वालों पे तो लागू ही नहीं है. एंड ऑल्सो ऑब्वियसली द कार पीपल एज वेल, लेट्स नॉट बी socially biased. But point is कि चांस मार लेते हैं, क्या होगा? 98% ऑफ द टाइम आई विल गेट अवे विद इट. तो माइट एज वेल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की. और कोई कैमरा का सिस्टम तो है नहीं, कोई पकड़ तो होनी नहीं है, तो फिर मैं क्यों ना करूं? मैं अपना 2 मिनट कीमती जिंदगी के क्यों ना बचा लूं बाय ब्रेकिंग अ फकिंग सिग्नल. सो सिमिलरली दिस एक्ट ऑफ not listening to the law and doing what your might wills is the problem at hand. And I agree, and I really think कि कानून इतना स्ट्रांग होना चाहिए और उसकी पनिशमेंट भी इतनी सिवियर होनी चाहिए कि लोग अगली दफ़ा सोचने से 10,000 दफ़ा सोचें कि ये वाकई हमें करना चाहिए, इज़ इट वर्थ द रिस्क और नॉट. एंड व्हाट आर लॉज, मतलब लॉज का फ़ायदा क्या है अगर वो इन्फोर्स ना किए जाए. I can pass a million bills saying that you should not pollute, you should not do this, you should not do that. लेकिन एक तो उसकी पनिशमेंट बहुत ग्रेट होनी चाहिए और फिर उसकी इन्फोर्समेंट भी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए. बिकॉज एनी लॉ विदाउट इन्फोर्समेंट इज़ यूजलेस, पीरियड, दैट्स इट. मतलब आपने कानून आप 1000 बना लें बैठे बैठे, यू कैन मेक a million laws in the parliament, you can pass a million bills, but if it is not really favoring or doing any good to anybody, कद्दू फट नहीं पड़ने वाला. Nobody cares, nothing will change. So yeah, anyway, it is quite a dismal news. And बहुत शर्म की बात है कि अगस्त 2023 में भी हमारी कौम के जो बच्चे हैं वो अभी तक they're getting raped in broad daylight. And कहने को हमारी कौम जो है we are very pious Muslim believers, and people who respect and honor the female child, the female human, but news like this is still rampant. और फिर हम बाकी मुल्कों पे उंगलियां उठाते हैं कि देखो वहाँ पे अजाब आ गया, वहाँ पे अजाब आ गया. हमारी कौम क्या साफ सुथरी है? दिस इज़ द पाक कौम दैट वी हैव, दिस इज़ द प्राइड ऑफ द नेशन दैट वी हैव, दैट वी कंटिन्यू टू beat our chests against on every 14th August. This is what we should be proud of? Clearly not. So I know this video is getting quite morose, but क्या करें? This is the typical stress that one standby person has to endure every day and then continue their lives as normal, क्योंकि ज़िंदगी तो चलनी है ना आगे. और रियलिटी ये है कि अभी तो चलो फोकस 3-4 दिन की लाइमलाइट इस टॉपिक को मिलेगी, फिर से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फिर कौम का गुस्सा जो है वो कहीं और चला जाएगा. तो द अटेंशन स्पैन ऑफ द पब्लिक विल कीप ऑन ड्विंडलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड
calamities will continue to exist until and unless somebody takes a formative action, reformative action. And policymakers तो भाई, like I will just conclude on one thing, इंसान की बस की बात नहीं है. Just know, if you are a policymaker, if you're a politician who steals money, if you are someone who has the power and not exercising it to the good of the people, just know that eventually there will be a time jab you will be held accountable. Maybe not in this world, maybe after. And then your temporary happiness will not do you any good, because अगर आपके अमाल पे कहानी की बात जाती है तो फिर तो हो गया काम. देन इट विल बी टू लेट. सो सुधर जाओ. आई मीन आई कैन ओनली गिव यू रिलीजन का की धमकी, बिकॉज इंसानी धमकियों से तो आपका कोई ज़र्रा फर्क भी नहीं पड़ना. तो अगर गैरत है, अगर कहीं डीप डाउन इन योर हार्ट अगर कुछ फीलिंग है कि भाई कॉन्शियसनेस डीप डाउन है, तो शायद गैरत आएगी और शायद यू विल डू समथिंग. और अगर नहीं है तो फिर वही बेगैरती के दिन आगे चलते रहेंगे. एनीवे, ये आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है. सो ऑन अ रादर पिस्ड ऑफ नोट, लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो ऑन दिस मनहूस म्यूजिक. Okay, bye.